interior of the earth. Our earth is basically a sphere which can be divided into different layers if we move from the surface to the bottom. These layers are crust, mantle and core. The uppermost layer crust is solid in nature, and as it is solid in nature, it shows brittle property. Means it breaks into parts. We see that the uppermost layer crust has been broken into several parts. These parts are known as plate. And beneath this plate or beneath the crust, the liquid layer, which is semi-liquid in nature, it is known as mantle. तो क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करता है और वो बेसिकली कई डिवाइडेड प्लेट्स में है, कई प्लेट्स में डिवाइडेड है और वो मूव करते हैं. अगर अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट की हम जहां तक बात करें तो ये ओशियन, माउंटेन्स और कॉन्टिनेंटल जैसे रीजन्स में डिवाइडेड है. ओशियन से क्रस्ट की थिकनेस की बात करें ये सबसे कम होगी, माउंटेन्स में ये सबसे ज़्यादा, और एवरेज अमाउंट ऑफ क्रस्ट थिकनेस वी टेक फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरिया. कॉन्टिनेंटल एरिया की अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अबाउट 30 किलोमीटर्स, एंड फॉर आवर माउंटेनियस रीजन क्योंकि ये अपलिफ्टेड एरिया है इसलिए ये अबाउट 70 किलोमीटर्स. एंड फॉर द ओशियनिक रीजन, and for this oceanic region क्योंकि oceans deep inside the earth surface float करता है या मौजूद है, तो इसकी thickness almost 8 to 10 kilometers की होती है. Okay, if we cross the crust, the layer we found the mantle. Mantle layer is a liquid or semi-liquid in nature, or we can say the mantle is fluid in nature. However, the core is solid in nature. If we go from top the surface of earth to the bottom inside, we see the density and temperature increases. अगर इस बात को हम ध्यान रखें तो हमें ये पता चलेगा कि अर्थ की सरफेस से इंटीरियर ऑफ द अर्थ तक जाने पे डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसका मतलब कोर विल बी द मैक्सिमम डेंस पार्ट ऑफ द आवर अर्थ. ओके, नेक्स्ट, the mantle, which is fluid or semi-fluidic in nature, and the core is also solid in nature. Divide the crust, mantle and core in further different sections. These different sections are outer and inner layer respectively. Crust के लिए outer crust, inner crust, mantle के लिए भी outer mantle, inner mantle, और core के लिए भी outer core and inner core. ये फर्दर सब डिवीजन डिसकंटिन्यूटी को शो करता है. नेम दिस डिसकंटिन्यूटी एज द फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द आउटर एंड इनर क्रस्ट इज नोन एज कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल द सेकंड डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज मोहोरेविक डिसकंटिन्यूटी. द थर्ड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर एंड इनर मेंटल इट इज नोन एज reciprocating discontinuity. The fourth discontinuity between mantle and the core or the outer core, it is known as Gutenberg discontinuity or very charged Gutenberg discontinuity, and the last discontinuity is between outer and inner core, which is known as Lehman discontinuity. So there are 5 discontinuity in the whole division of the earth. Next thing, all this now. If we talk about the composition of these three interior of the earth or layer of earth, we say that the crust, which is already have divided by us into outer and inner, the outer is made up of silicon and aluminum in whole composition. However, the inner is made up of silicon and magnesium. Similarly, the mantle, which is in liquid in nature, are mostly composed of silicon. The last layer, which is our core, is made up of nickel and iron respectively. So this is a basic composition of our different layers of the earth. So the layer which constitute the crust and the upper or outer mantle, it is known as lithosphere.
and the layer mantle all together, the whole mantle all together, it is known as asthenosphere. So asthenosphere टोटल मेंटल के एरियाज को कहते हैं और